Hello everyone, welcome back to the channel CUET by Dream University. I am Ujashwini and we will be continuing our discussion on CUET PG 2025 question paper. So far we have completed 15 questions, and also if you want to practice more such questions, you can enroll in our test series which are based on latest CUET pattern. The link is in the description box. So let's start from question number 16. Question number 16. Which of the following is not correct about the effect of taxes on income and output? Okay, so we know that when tax rate is increased, when income tax increases, our disposable income decreases, right? Then we start demanding less, therefore, aggregate demand decreases, right? And hence output decreases. So we know that there is inverse relationship between tax rate and income and output. Okay, so we have to find out कि इनमें से कौन सा ऑप्शन incorrect है, right? First is income tax is lower the multiplier effect. Okay, so mathematically we know that multiplier K stands for 1 upon 1 minus MPC plus MPC multiplied by tax rate. And clearly we can see कि जब हमारा tax rate बढ़ेगा, हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, राइट? तो टैक्स रेट मल्टीप्लायर का इफेक्ट कम करता है, सो दिस इज करेक्ट, राइट? Option 2 is inclusion of taxes makes the aggregate demand curve steeper and hence increases the multiplier. क्या मल्टीप्लायर इंक्रीज करता है? नो. हमें बताना है क्या इनकरेक्ट है, तो दिस इज हमारा करेक्ट आंसर, राइट? ऑप्शन 3 क्या कह रहा है? इनकम टैक्सेस रिड्यूस द इंड्यूस्ड इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन. रिड्यूस करता है इंक्रीज इन कंजम्पशन, यस, यहाँ हमने देखा. ऑप्शन 4, स्विंग्स इन इन्वेस्टमेंट डिमांड हैव अ स्मॉलर इफेक्ट ऑन आउटपुट. यस, क्योंकि आउटपुट कम बढ़ता है, राइट? क्योंकि घट भी रहा है, क्योंकि डिमांड नहीं है. सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 17. अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, सो ये जो थ्योरी और मॉडल्स हैं ये इंटरनेशनल ट्रेड के हैं और हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है, राइट? So, these models and theorems we usually study in detail when we prepare for UGC NET exam. So it was a difficult question to answer, but nevertheless, it was difficult for everyone. The correct answer is the Ribinski theorem came in 1955. Product cycle model came in 1966. Technological gap model in 1961. Specific factor model in 1970. Okay, so correct answer is option 2. Now question number 18. 18. Match the following. Okay, so ये easy question था because हमें नेचर ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ था और हमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड के रिलेशनशिप से उनको मैच करना था. सो पॉजिटिवली स्क्यूड, moderately skewed, negatively skewed, and symmetric distribution. सबसे easy we know symmetric distribution when arithmetic mean, median, and mode are all equal, right? Then positively skewed, we know पॉजिटिवली स्क्यूड कब होता है? जब टेल जो होती है वो राइट हैंड साइड पे होती है. यहाँ हमारा मोड होता है, यहाँ मीडियन है, यहाँ मीन. सो मोड सबसे छोटा होता है, राइट? सो मोड सबसे छोटा यहाँ है, सो ए का फोर्थ. नेगेटिवली स्क्यूड जहाँ पे मोड सबसे बड़ा होता है, राइट? एंड मॉडरेटली स्क्यूड में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. ओके, now let's move to question number 19. लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारा CLRM के अजम्पशन टेस्ट होने वाले हैं. ओके, ये भी इजी क्वेश्चन था बिकॉज इसमें CLRM मॉडल का फर्स्ट अजम्पशन ही पूछा गया है, जो कि है कि हमारा मॉडल में पैरामीटर्स तो लीनियर होने ही चाहिए और वेरिएबल्स में और मे नॉट बी लीनियर, राइट? सो लीनियर इन
explanatory variables but may not be linear in parameters? No. Non-linear in parameters and must be linear in variables? No. Linear in parameters, correct, but must be linear in variables? No. Linear in parameters and may be linear in variables. Yes, this is. So it was easy to answer. Now next question. Question number 20. If we twice flip a balanced coin, what is the probability of getting at least one head? ओके, सो जब हम कॉइन को 2 बार फ्लिप करेंगे तो हमारे आउटकम्स क्या हो सकते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल एंड टेल हेड, राइट? हमसे पूछा गया है कि एटलीस्ट एक हेड आ जाए, राइट? 2 भी आ सकते हैं। सो वो कहाँ आ रहा है? यहाँ 2 बार हेड, 1 टाइम्स हेड एंड हियर 1 टाइम। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वी नो, favorable outcomes, number of favorable outcomes upon total number of outcomes. Total number of outcomes by 4 है, favorable 3 है, so therefore answer is 3/4. It is option number 4. Now next question, king demand curve model. Okay, can explain. First let's um, recall what is king demand curve. It was given by Paul Sweezy, right? And इसमें डिमांड कर्व में हमारा किंग आ जाता है, राइट? ये किंग है, ओके। सो इससे क्या होता है कि जो हमारा MR कर्व है, राइट, वो इस किंग पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है, राइट? एंड व्हाट डज इट शो? इट शोज दैट यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट बढ़े या कम हो, हमारी प्राइस चेंज नहीं होती है, राइट? ऑल्सो क्योंकि ओलिगोपोली मॉडल को समझाता है, इसमें ये बोलते हैं कि प्राइस डिक्रीज तो फॉलो होता है, दूसरी फर्म्स फॉलो करेंगी लेकिन प्राइस इंक्रीज फॉलो नहीं करेंगी। देयरफॉर व्हेन वी इंक्रीज आवर प्राइसेस, तो अगर हम अपने प्राइस इंक्रीज करेंगे तो दूसरी फर्म प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगी। अगर दूसरी फर्म्स प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगी तो हम लोग अब मार्केट लूज कर देंगे, राइट? सो इसलिए यहाँ पे प्राइस इंक्रीज नहीं होता है। So now let's read the options. It is can explain the level at which prices will be set by the firm to maximize profit. No. क्या ये profit maximization की बात करती है? No. The level of price at which the king will occur as well as the height of the king. No. ये भी नहीं explain कर पाता है, and these are the limitations of this model. Okay. The price rigidity in the face of changing cost and high rivalry, yes. ये एरिया, ये गैप हमें एक्सप्लेन करता है कि प्राइस जो है रिजिड होगी इस एरिया में, राइट? सो दिस इज करेक्ट। एंड द implications for the volume of output owing to the changing market demand, yes, because किंग के पहले तक मार्केट हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो इलास्टिक होता है, और किंग के बाद इनलास्टिक बन जाता है बिकॉज ये प्राइस increase is not followed and price decrease is followed, right? So our correct option is C and D. Okay, now let's move to next question, question number 22. Okay, match the following. सो हमें इस क्वेश्चन में स्टेट्स के नेम दिए हैं और इन स्टेट्स को हमें उनके डिपेंडेंसी रेशियो से मैच करना था फॉर द ईयर 2023-24। सो ये इंडियन इकोनॉमी का एक रैंडम क्वेश्चन है। वाई? बिकॉज हम इतना सारा डेटा तो लर्न नहीं कर सकते, ओके। बट स्टिल इसका राइट आंसर ये होता कि आंध्र प्रदेश का डिपेंडेंसी रेशियो, अच्छा डिपेंडेंसी रेशियो होता क्या है? इट इज नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स डिवाइडेड बाय वर्किंग क्लास, राइट? और यहाँ पे डिपेंडेंट्स कौन होते हैं? डिपेंडेंट्स होते हैं चिल्ड्रन बिलो
एज 15 एंड एल्डर्स जो कि 65 प्लस होते हैं। ओके, वर्किंग पॉपुलेशन, हमारे डिपेंडेंट्स वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट नहीं होते हैं, और डिवाइड बाय वर्किंग क्लास, तो ये डिपेंडेंसी रेशियो होता है। राइट, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन 3, दैट इज आंध्र प्रदेश 41.4, बिहार 66.3, केरला 50.6 एंड उत्तर प्रदेश 52.2। The correct option was answer was 3. Now question number 23. Suppose that the random variable x takes on the values -1, 0, 2 with the probability 1/8, 1/2 and 3/8. Okay, और हमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, इजी क्वेश्चन, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो वी नो कि जो वो वैल्यू ले रहा है उसको हम उसे मल्टीप्लाई करना है उसकी प्रोबेबिलिटी से और उसका सम करना है, राइट। सो इट टेक्स वैल्यू -1 विद द प्रोबेबिलिटी 1/8, plus it takes value 0 with the probability 1/2, plus it takes value 2 with the probability 3/8. Okay, so we'll solve this. This will become 1 minus 1/8, 0 plus 6/8, and this will become 5/8. So correct answer is 5/8. Okay, so ये भी easy question था. Now let's move to question number 24. In the case of classical economics, an increase in the nominal money stock causes. Okay. So we know classical economics की बात हो रही है, तो हमें पता है कि दो चीज हमें कन्फर्म है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वर्टिकल है, एग्रीगेट डिमांड ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड मनी स्टॉक की बात हो रही है। सो वी नो व्हेनेवर मनी सप्लाई इंक्रीजेस our price increases proportionately, right, from QTM, that is quantity theory of money, राइट। अब ऑप्शंस देखते हैं। एन इंक्रीज इन द आउटपुट, ऐसा कुछ क्लासिकल इकोनॉमिक्स बात करती है? नहीं। शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कर्व टू द लेफ्ट, एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या, एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाएगी मनी सप्लाई बढ़ने से? नहीं, रेदर इट शुड इंक्रीज, राइट, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्लासिकल इकोनॉमिक्स में तभी बढ़ सकता है जब मनी स्टॉक बढ़े। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। नो चेंज इन द प्राइस लेवल, नो, प्राइस लेवल तो प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है, so this is also wrong. Shift in the aggregate demand curve to the right, yes, this is correct. This was also an easy question. Now question number 25. Which of the following are applicable to the individual's expenditure function? Okay, it is homogeneous of degree 0 in the prices. इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइसेस सारे प्रोडक्ट्स की, लाइक दो प्रोडक्ट्स है, दोनों प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है इंक्रीज कर दी जाए, राइट, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होगा। क्या ऐसा होता है? नहीं, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए कि इट विल इंक्रीज, ओके, प्रोपोर्शनेटली, सो दिस इज रॉन्ग। इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर टू अचीव अ गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। क्या हम एक्सपेंडिचर को, कॉस्ट को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं या फिर मिनिमाइज करने की बात करते हैं? मिनिमाइज, राइट, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इट इज नॉट डिक्रीजिंग इन प्राइसेस, यस, मतलब अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो ये डिक्रीज नहीं होगा, रादर इंक्रीज करेगा, सो दिस इज करेक्ट। इट इज concave in prices, this is also correct, so our option 4 is correct. Okay, now question number 26. We have to match these deficits, okay, but the problem was ये हमने 2021 का पूछा है, राइट, 2025 के क्वेश्चन पेपर में 2021 का। ओके, सो बट हाँ, लॉजिकली अगर हमने 2025 का भी पढ़ा है तो हमें पता है कि डेफिसिट्स का ट्रेंड क्या होता है, राइट।
डेफिसिट का ट्रेंड, तो वी कैन आंसर दिस इजीली। वी नो दैट जो हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है वो सबसे बड़ा होता है, देन हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आता है, फिर प्राइमरी डेफिसिट, और सबसे छोटा हमारा होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 1.2 हमें दिख रही है, सो करंट अकाउंट डेफिसिट का आंसर क्या होगा? 1.2। राइट, सबसे बड़ी फिजिकल डेफिसिट की वैल्यू होती है जो है कि 9.2। हमें ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर 4 में। राइट, नो, ऑप्शन नंबर 2 में। राइट, बी का था। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। ओके, वैसे ही फिर आता है रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट का सेकंड हाईएस्ट वैल्यू 7.3, प्राइमरी डेफिसिट 5.7। सो लॉजिकली हम इसको इजीली कर सकते थे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following is not considered in the calculation of GDP? Okay, easy question. Inventory stock, yes, we consider it. Wages, yes. Brokerage or commission on purchasing second-hand goods, yes. Sale or purchase of second-hand goods, no. Right. So हमें ऑप्शन में बताना था कि which is not considered. So we know that fourth is our correct option. Okay. Now let's move to question number 28. Calculate the standard deviation for the following sample. Okay, sample. Standard deviation का formula we know. Standard deviation equals to summation of square of deviations divided by n minus 1 under. By n minus 1 because sample की बात हो रही है, अगर sample नहीं लिखा होता तो हम लोग n ही लिखते, right? So this is something which we can be confused about. So n minus 1 आएगा. Now let's calculate these deviations. Sample is 8, 7, 9. First, let's calculate its mean, which is 8 plus 7 plus 9 is 24. Divide by 3 equals to 8. So, a deviation 8 minus 8, 0. 7 minus 8, minus 1. 9 minus 8, 1. Now, इसका स्क्वायर करेंगे हम. 0, 1, 1. Summation 2. So it comes out to be 2 divided by 3 minus 1, that is 2, under root equals to 1 under root. So our correct option is option number 3. Okay. Now let's discuss question number 29. Commercial banks in India are subject to statutory liquidity requirement. Which of the following is not the part of the SLR? Okay. So हमें पता है कि कमर्शियल बैंक SLR और CRR मेंटेन करती है, कैश रिजर्व रेशियो, राइट? CRR कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना होता है और ओनली इन कैश फॉर्म. ओके, SLR कमर्शियल बैंक खुद के पास एज ए रिजर्व रखती है, एंड विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, SDRs, गोल्ड, कैश. ओके, सो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इसमें से SLR का कंपोनेंट कौन सा नहीं है. सो वी नो ट्रेजरी बिल होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, वेयर अनएनकम्बर्ड मीन्स दैट जिसका कोई डेट नहीं हो, कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं हो. दिस इज ऑल्सो द कंपोनेंट. Current account balances with other banks, it is also part of SLR. Right. Here required reserves means CR. तो क्या CRR SLR का पार्ट होता है? No, नहीं होता है, right? So our correct option is option number 1. हमें बताना था कि कौन सा पार्ट नहीं. Okay. Now let's move to question number 30. Last question of today's discussion. Assuming that the production function is homogeneous of degree 1 and Euler's equation holds, then if MPL is greater than APL, then, okay. So first we know that Euler's equation of homogeneous of degree 1
इट रिफर्स टू प्रोडक्ट एग्जॉर्शन थ्योरम, राइट। प्रोडक्ट एग्जॉर्शन थ्योरम हमें क्या बोलती है, या यूलर्स इक्वेशन क्या बोलती है, कि जब हम फैक्टर्स की पेमेंट को हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पे करेंगे तो हमारा पूरा प्रोडक्ट जो है, जो पूरा आउटपुट है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो कौन सी इक्वेशन होल्ड करनी चाहिए, आउटपुट, डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको लेबर से, देन टोटल नंबर ऑफ लेबर प्लस डिफरेंशिएशन टोटल आउटपुट बाय capital multiplied by capital equals to n in total output, right? Total output, that is function of capital and labor. And here n is given to be 1, homogeneous optic refund, right? So for this equation to hold, what will happen? Question में given है कि MPL is greater, right? अगर MPL बढ़ेगा, so for this equation to hold, this MPK should decrease, right? So हमारे ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, MPL विल बी नेगेटिव, नो MPL तो बढ़ रहा है, राइट, दिस इज रॉन्ग। MPK विल बी जीरो, जीरो तो नहीं हो सकती, दिस इज लाइक डिपेंड्स कि दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है। MPK विल बी नेगेटिव, यस, हम बोल रहे हैं कि MPK कम होगा ना कि जीरो, सो यस दिस इज करेक्ट। MPL एंड MPK विल बोथ बी नेगेटिव, नो, हमारा MPL जो है वो बढ़ रहा है, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा। So with this, we ends today's video. Thank you for watching till the end.